Good morning to all of you. So today we are going to study the remaining part of Introduction to Child Health Nursing. In the last class, we had studied the definition of pediatrics. We had studied the definition of pediatric nursing. We also had studied what are the basic differences between adult and the child. We had studied what are the qualities of the nurse, and we had started with extended role of the nurse. Okay. So, at the last of the previous class, I had told you that I would be explaining you what is the difference between extended role and the expanded role. So, this I will be clarifying in this class. So, in today's class, we are going to study the remaining part of extended role of the nurse and what is the expanded role of the nurse. So, let's start the class. So this is extended role of the nurse, the G point. Okay. First is leader and consultant. Okay. Leader and consultant. Okay. So first point is the pediatric nurse provides leadership in the professional practice setting and the profession. Okay. ठीक है वार्ड में आपने अलग वार्ड में काम किया होगा तो आपने देखा होगा हर एक वार्ड में वार्ड इंचार्जेस आर देयर ओके so they provide leadership in professional practice as well as in profession. Okay, so in different, for example, if you take example of registration councils, Indian Nursing Council, International Council of Nurses, or any leadership roles, so they have their own leadership roles. Okay, the extended role of the nurse. So in because we are studying pediatrics, so in pediatric setup also she provides leadership in professional practice. Professional practice means in the clinical areas or administrative areas, whichever areas it is, she provides. She also acts as an agent of change. Agent of change means whatever change is required, she would ensure that the respective changes are brought about. ठीक है जो हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी है दे कीप ऑन चेंजिंग ओके तो वो चेंजिंग के हिसाब से वी नीड टू अडेप्ट टू इट सो शी एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ चेंज next is because she is a consultant also she consults with other health professionals and because she is a consultant other health professionals also interact with the nurses okay so she not only acts as a consultant but also consults with other health professionals okay then because she is a leader she delegates responsibilities to other member of the team आपने देखा होगा वार्ड में the in-charge sister is mainly in the administrative areas but she delegates responsibility कि ये person है वो round she will be conducting the round somebody will do the medication somebody will do the intent work etc ठीक है डेलीगेट रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है अलग अलग लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी बांटना तो who will do that a nurse leader will do it okay next is involves in decision making process and considers factors related to safety effectiveness cost and impact on practice ठीक है decision making a lead because she is a leader she is involved in the decision making okay and the and considers factor related to safety देखो बच्चों में safety issues are very important it is important for adults also but safety issues are more important in terms of children ठीक है कोई medicine start कर रहे हैं कोई some new equipment is there so she is always concerned whether it is safe to use for children or not then is effectiveness anything which has been planned क्या वो effective है कि नहीं है what are the costs and what is the impact on practice impact on practice मतलब ये step उठाने से नर्सिंग केयर में क्या फर्क आ रहा है या पेशेंट केयर में क्या फर्क आ रहा है ठीक है सो दिस इज ऑल द रोल ऑफ नर्स एज अ लीडर एंड कंसल्टेंट ठीक है तो लीडर के रूप में क्या करेगी शी एक्ट्स एज अ लीडर इन प्रोफेशन सेकंड इज because she is a leader she will delegate the responsibility to others and because she is a leader and a consultant so she is also being consulted by others and at the same time she also consults with other healthcare professionals and she is involved in the decision making and ensures whether these factors are related to safety
इफेक्टिवनेस, कॉस्ट एंड इम्पैक्ट ऑन प्रैक्टिस. ठीक है. नेक्स्ट इज शी इज अ केयर प्रोवाइडर. ठीक है. केयर प्रोवाइडर मतलब भाई बेसिक, दिस इज जो भी बच्चे को जो केयर चाहिए दैट इज प्रोवाइडेड बाय द नर्स. ओके. सो इम्प्लीमेंट्स नर्सिंग केयर बेस्ड ऑन साउंड नॉलेज बेस, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, डेवलपमेंट थ्योरीज एंड डॉक्यूमेंटेड थेराप्यूटिक प्लान. ठीक है. अभी नाउ अनु मैडम हैज इज टीचिंग यू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. शी विल ऑल्सो बी टीचिंग यू सम डेवलपमेंटल थ्योरीज. ठीक है. अलग अलग एज में अलग अलग डेवलपमेंटल थ्योरीज आर एप्लीकेबल. ठीक है. तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. सो व्हेन यू आर अ पीडियाट्रिक नर्स जो केयर कर रही है तो उसको क्या क्या होना चाहिए? शी शुड हैव अ साउंड नॉलेज बेस. ठीक है. अभी जैसे नाउ वी आर टीचिंग यू पीडियाट्रिक्स. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क इन पीडियाट्रिक्स, सो क्या होना चाहिए? पीडियाट्रिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए. सेकेंड इज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर देयर. We have to follow those scientific principles. Then there are some developmental theories. ठीक है. जैसे साइकोसेक्सुअल थ्योरीज है. ठीक है. इमोशनल थ्योरीज, अलग अलग थ्योरीज है. वी विल बी स्टडिंग अबाउट सिगमंड फ्राइड थ्योरीज. ओके. अलग अलग थ्योरीज है विच यू विल बी लर्निंग. सो एज अ पीडियाट्रिक नर्स वी यूज दोज थ्योरीज एंड अ डॉक्यूमेंटेड थेराप्यूटिक प्लान. जो नर्सिंग केयर प्लान के बेस में शी विल बी प्रोवाइडिंग द केयर. नेक्स्ट इज प्रमोट्स ऑप्टिमल वेलनेस. हम लोग क्या चाह रहे हैं कि बच्चे का the baby should have a optimal wellness. ठीक है. Next is maintains professional practice standards by providing nursing interventions that meet individual needs and are consistent with total rehabilitation program. इसका क्या मतलब है? See, some diseases are there जिसमें long term डिजीज है. जिस लॉन्ग टर्म डिजीज मतलब जैसे कुछ डिजीज है, आज बच्चा एडमिट हुआ, maybe by a week or so the child is all right. Okay. But some diseases are there very long term. For example, it might be a nephrotic syndrome, it might be a juvenile diabetes mellitus जिसको or maybe a case of thalassemia, maybe a case of sickle cell disease. So these are all long term diseases, or maybe a case of cancer, etc. Okay. So what she does is she maintains professional practice by providing nursing interventions. Nursing interventions, हम आप लोग सब जानते हैं what you mean by interventions. Okay. So these interventions that meet individual needs. See, whenever we are giving nursing care, one thing to be kept in mind is the type of care which we give to one child will not be the type of care which is required by the another child. Why? Because the individual needs are different. Next is they are consistent with total rehabilitation program. उसका मतलब क्या है? जो long term disease है, the child needs to be rehabilitated. What do you mean by rehabilitation? Rehabilitation का मतलब क्या है? बच्चे का जो भी capability है, we try to bring it to as normal as possible. उसको आप क्या क्या कहते हैं? तो rehabilitation. ठीक है. तो जो भी हम केयर करते हैं that should be consistent. Consistent मतलब जो बच्चे का rehabilitation से मैच होना चाहिए. We should not teach something जो उसके लिए कोई मतलब का ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. For example, I will give you an example. Suppose this is a case of juvenile diabetes mellitus. ठीक है. Juvenile diabetes mellitus को इंसुलिन लगता है. ठीक है. Some children require insulin, so they need to be taught how to give injections, insulin injections, when to give. Next is how to monitor the urine sugar by doing a urine test. There are different ways how you do blood sugar. Blood sugar can easily be done at home by using this glucometer. Okay, so these are the different requirements which can be done. So care provider, she will be providing nursing interventions which are suited for एक patient को क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से होना चाहिए, and it should be consistent. Patient के long term में if we teach how to do a urine sugar, how to monitor the blood sugar level, all these things क्या है उनका total rehabilitation में मदद करेगा. ठीक है. Next is health teaching and promotion. या फोटो आप देख रहे हैं, see she is teaching, this nurse is teaching, doing a health teaching. Okay, so shares rehabilitation knowledge and skills with patients, families and interdisciplinary team and community. ठीक है. तो नर्स के पास जो भी नॉलेज है रिलेटेड टू रिहेबिलिटेशन, जो भी स्किल्स सिखाना है,
so that she shares, मतलब आपस में शेयर करते हैं. Next is offer support to family about special needs of the children and adolescents with disability. See, all children will not be same. Some children are there who may be having special needs. For example, the child may be a case of mental retardation, or the child may be blind, or the child may be having maybe deaf and dumb. So different special needs are there. Okay, so or the child may have some congenital abnormality. Okay, so this nurse, they support the family in special needs of the children and adolescents with disability. बच्चों के लिए भी और adolescents जिसको disability है, she offers the support. Okay, next is she acts as a resource and role model for nursing staff and students. ठीक है, so the nurse will not only act as a resource person, but she will be a role model and provides teaching to help to cope with and prevent health and functional problem. ठीक है, so existing problem को कैसे solve करें उसके लिए मदद करेगी. Health issues ना हो उसके लिए all those preventive measures related to the type of disease. जैसे for example जो बच्चे को जुवेनाइल डायबिटीज मेलिटस है उसको कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है. This can be prevented only by good monitoring, okay, and timely checkup. So these are the issues. आप करते रहने से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का chances कम रहेगा. Then she will be educating the children how and their families what are the symptoms of hyperglycemia and the hypoglycemia, जिससे बच्चे आसानी से identify कर सकते हैं and prompt action can be taken. Okay, so this is giving a need-based health teaching to the patients' families so that they can cope up with the special needs of the children, and she is acting a role model and will be giving health education as per the requirement. Okay. Next is she is a team member. Okay, nursing care एक person से अकेले नहीं होगा. She is a part of a team. Okay, she collaborates with other professionals, a child, adolescent, and the family, assessing, planning, implementing, and evaluating an individual interdisciplinary team plan of care. Okay, so she is a nurse. What she will do is she will collaborating with other members of the health team. इसके साथ में बच्चे से बात करना है, or maybe if the patient is an adolescent, though, so they also have to be interacted. Family members is सब मिलाकर then she will do what is the assessment, planning, implementing and evaluating. जो भी आपने plan किया है, she will help in assessing, planning, implementing and evaluating. Okay, collaborates in the development of new service delivery models that best meet the needs of young clients and their families. ठीक है, अगर कोई नया services start हुआ है, so those things if it is there, she will collaborate in the development of new service delivery models. Okay, then interacts with and contributes to professional development of peers and colleagues. Okay, as a nurse उसका ध्यान क्या रहेगा, भाई मेरे को नॉलेज या स्किल रहे उतना ही नहीं, बट दैट हैज टू बी ट्रांसमिटेड टू द पीयर ग्रुप मतलब जो साथ में है. ओके, सो दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू द पीयर्स एंड एज वेल एज द कोलिग्स. ठीक है, जो साथ में काम करने के लोग हैं. Now, nurse is not only all those things, but she is a good researcher. Okay, so evaluates the existing research in light of current evidence and research findings. ये तो आपने देखा होगा भी, because it is a COVID situation. Almost every day numerous researchers on COVID are there, maybe in the internet, maybe newspapers, etc. etc. ठीक है, so अभी का जो research है, अभी का जो findings मिल रहा है उसके बेस में whether it is okay or not. ठीक है, I will give you an example. Long back जब research वगैरह उतना start नहीं हुआ था, if when you go to the pediatric ward you will be seeing about phototherapy. फोटोथेरेपी मतलब बच्चों को लाइट के नीचे रखते हैं ताकि उनको जॉन्डिस कम हो. ओके, तो ये फोटोथेरेपी के बारे में इट वाज अ नर्स हु ऑब्जर्व्ड कि जो बच्चे खिड़की के पास है जहाँ पे धूप आता है उनका बिलिरुबिन जल्दी कम होता है एज कम्पेयर टू दोज चिल्ड्रन who are kept away from the window. तो उसको समझ में आया कि इसमें लाइट का कुछ इंपॉर्टेंस है. सो दिस इज हाउ you examine
दिस इज हाउ वी एग्जामिन, ठीक है. सो इवेल्युएट्स एग्जिस्टिंग रिसर्च इन द लाइट ऑफ करंट एविडेंस. करंट एविडेंस मतलब हमारे पास जो अभी अभी फाइंडिंग्स है, ठीक है, तो उसके बेस में वेदर रिसर्च अभी के फाइंडिंग्स के बेस में व्हाट इज द एग्जिस्टिंग रिसर्च और जो भी अभी हमारे पास एविडेंस है उससे शी विल बी ट्राइंग टू मैच. ओके, then integrates evidence and research findings into best practices. Okay, जैसे for example some years before IV cannulation के बाद लाइन को पेटेंट करने के लिए we used to use heparin, ठीक है. Now heparin giving again and again was causing bleeding issues. Okay, bleeding होने का chances बढ़ रहा था. Now research has been done and now this has been changed, ठीक है. तो अभी हम हेपारिन नहीं डालते हैं. So what are you doing this? Integrating evidence and research findings into best practices. जो भी हमारे पास एविडेंस है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मतलब जिसका प्रूफ हमारे पास है उसके बेस में उसको आप प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हैं, दैट शी विल बी रिसर्चिंग. थर्ड इज कंट्रीब्यूट्स टू नर्सिंग एंड फील्ड ऑफ पीडियाट्रिक रिहेबिलिटेशन टू पार्टिसिपेशन इन रिसर्च. बच्चों को किस तरीके से हम लोग रिहेबिलिटेट कर सकते हैं इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म डिजीज. शी विल बी डूइंग रिसर्च एंड हेल्पिंग इन दैट. ओके, इंट्रा एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इज एसेंशियल टू कंटिन्यूअल डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स एंड टू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है. इंट्राडिसिप्लिनरी मतलब नर्सिंग फील्ड है तो दैट इज रिसर्च विच इज डन इन नर्सिंग फील्ड, दैट इज इंटर मतलब एक डिसिप्लिन का दूसरे डिसिप्लिन के साथ में, ठीक है. सो वंस यू हैव दिस कॉम्बिनेशन, so the knowledge as well as skills is going to increase. Okay, next is professional practice, education and evaluation. Okay, attains knowledge, skills and competency that reflect current nursing practice. Current nursing practice मतलब अभी का जो existing practices है उसका knowledge, उसका skill और उसका competency. See, some years before computer was not used at all, but now you will find all nurses are using computers. Okay, so जो उसके related knowledge, skills and competency people need to develop. Okay, some new ventilator has come, so the nurse has to learn how to manage those ventilated babies. So this is how you attain. Next is evaluates one own practice in relation to professional standards and guidelines, relevant statutes, rules and regulation. ठीक है, that is very very important. अभी के finding के हिसाब से am I able to do those works or not, ठीक है. So that has to be evaluated. जब तक हम लोग अपने आप के evaluate नहीं करेंगे we will not be able to improve. So हमको self evaluation करना is very very important. Okay, then systematically enhances the quality and effectiveness of nursing practice. Okay, so that is also very important that we have to increase the quality and effectiveness. हम लोग जो nursing care दे रहे हैं उसका quality बढ़ाना है और उसको और effective बनाना है. Next role is manager. Okay, so pediatric nurse is a manager. Manager मतलब एक administrative role. You must have seen in all the wards, including pediatric ward. So she is a manager of the pediatric hospital. It can be clinic or it can be a community based, and she should organize the care. So as a manager, what is her role? उनको organize करना सारा care so that the outcome is successful with better prognosis and good health. ताकि बच्चे का prognosis अच्छा रहे और health भी अच्छा रहे. Now बस recreationalist मतलब आप pediatric ward में आप जाएंगे तो you will find a recreation room is there या play room is there. So children require this recreation much more than adults. That is very very important. Okay, so the supportive role of the pediatric nurse is very important to address the crisis in case by illness during illness or hospitalization. बच्चा एडमिट हो गया वार्ड में है ना, या तबीयत ठीक नहीं है, so she has to use her recreation skills. So what she can do is she can organize play activities for recreation and diversion for child's emotional outlet. Okay, the play room hai ya play things which can be given to the bed so that all things can be done. Then next is therapeutic relationship. Ek acha relationship with the child as well as with the family, that has to be maintained. Now is ethical decision making. Okay, एथिकल डिसीजन मेकिंग उसका मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ न्यू बॉर्न बेबी,
बहुत ज़्यादा प्रीटर्म है, तो हमको वेदर वी शुड वी रिससिटेट और शुड वी नॉट रिससिटेट, तो दैट इज एथिकल ड्रामा। तो कई बार करना है नहीं करना है, इस टाइप का एक सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। सो एथिकल डायलेमास, इसको हम क्या करते हैं, एथिकल डायलेमास अराइज बट कंपीटिंग मोरल कंसिडरेशन एंड वेरियस अल्टरनेटिव्स। कई सारा स्टेप्स है, उसको ध्यान में रखते हुए वी नीड टू डू दिस, ठीक है। सो वी हैव टू फाइट, द नर्सेस मस्ट डिटरमाइन। सो एज नर्सेस पेरेंट्स को ये डिसीजन लेने में मदद करेगी नर्सेस, ओके। सो नर्सेस मस्ट डिटरमाइन which is the what is best for the child, so that has to be done. So in that we have to keep the societal morals, the professional actions, standards, family values, nurses personal values, सबको ध्यान में रखते हुए the nurse should facilitate what is best for the child, ठीक है। Next is healthcare planning, that is very very important. The सिर्फ केयर देना अकेले नहीं है, she is a very important of the healthcare team, okay. So this nurses are involved in healthcare on a political and legislative level frequently. Aksar maybe if some law has to be made, so nurses are also consulted. So healthcare planning involves not only providing new services to children but also promoting the highest quality in existing services, okay. तो healthcare planning में new services भी देना है and at the same time existing services में क्या best दे सकते हैं, that also needs to be planned, okay. So that is healthcare planning. So that was all about extended role. Extended role का meaning क्या है, that is what I want to tell. Extended role of a nurse is activities concerned with patient or hospital or a community that are appropriate for delegation by doctors to nurses. अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, ये सारा role are those activities which are either concerned with patient, maybe with the families, maybe in a community setting, maybe in a hospital setting, and these are appropriate for delegation by doctors to the nurses. And these are those activities which are basically told by the doctors, which has to be done by the nurses. So these are extended role, okay. Now what is expanded role? Expanded role of the pediatric nurse. The expanded role of nursing means enlarging the sphere of nursing roles within the boundaries of nursing, or it is the responsibility assumed by a nurse in the field of practice autonomy, ठीक है। autonomy मतलब खुद करने का, हमारे नर्सिंग फील्ड से ही संबंधित है, but this is not something that the doctor has to tell, but this is something that the nurse can manage with the within her own practice, okay. So directions for expanded role, दो role है, एक outward एक inward है, okay. So outward का क्या, nurses are moving from curative sector into the community for supporting primary health care, ठीक है। पहले nurses कहाँ थे, सिर्फ हॉस्पिटल में थे, पर अभी कम्युनिटी में भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट स्कूल हेल्थ नर्सिंग सर्विस, MCH सर्विस, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस, ये सब आउटवर्ड है, ठीक है। नाउ व्हाट इज इनवर्ड, शी विल बी इन्वॉल्व इन डायरेक्ट केयर ऑफ द चाइल्ड एंड क्लाइंट में बी इंडिविजुअल और में बी a family. Now, what is the expanded role of the nurse? So, first is advanced pediatric nurse practitioner. Okay, so pediatric nurse practitioners are there. जैसे अभी in Government of India has also community health nurse officer. ठीक है, 6 months का clinical posting देकर then examination is there. फिर उसके बाद they are posted. Doctors are not there in this sub centers. So sub centers are managed by community health officers. Okay, तो उनका काम क्या है, जो भी patients आ रहे हैं उनका assessment करते हैं. Basic, they have the authority to prescribe basic medications. Okay, so similar to this with proper training, advanced pediatric nurse practitioner ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ओके। सो ग्रेजुएट ऑफ प्रोग्राम विद स्पेशलाइजेशन APNP, दैट इज एडवांस्ड पीडियाट्रिक नर्स practitioner, and preparing to become a leader in care of children across the health and illness spectrum across institutional boundaries. उसका क्या मतलब है, ऐसा एक प्रोग्राम, स्पेसिफिक प्रोग्राम है which is called as advanced pediatric nurse. So by doing this training she can be a leader in case of children. वो कैन बी विद इन द इंस्टीट्यूशन, आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन, सब मैनेज कर सकती है.
Next is Family Nurse Practitioner, FNP. So Family Nurse Practitioner is a registered professional nurse with advanced education and clinical training to provide healthcare to individuals across lifespan in families. Family मतलब age कुछ भी हो, so सभी का केयर करना, so including children. So their function is to provide multidisciplinary कल्चरली कम्पिटेंट कम्युनिटी बेस्ड केयर. कल्चरली कम्पिटेंट मतलब उस जगह के रीति रिवाज के हिसाब से जो केयर जरूरत है कोई भी एज में, सो दैट कैन बी गिवन. ओके, सो दे ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू एक्वायर नाउ करंट नॉलेज, प्रोवाइड एज अप्रोप्रिएट एज स्पेसिफिक क्वालिटी केयर. सो फैमिली नर्स प्रैक्टिशनर से स्टूडेंट्स को भी मदद मिलता है. दे ऑल्सो लर्न हाउ टू गिव केयर अकॉर्डिंग टू द एज. सो दैट वाज FNP, फैमिली नर्स प्रैक्टिशनर. नेक्स्ट इज क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट. ओके, ये भी एक स्पेशल कोर्स है. सो नर्सिंग एक्सपर्टाइज इन स्पेशलाइज्ड एरिया. सो दिस कैन बी मेडिकल, सर्जिकल, पीडियाट्रिक, कोई भी. तो क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट ऑफ पीडियाट्रिक्स. सो दिस कैन बी डन देयर. नेक्स्ट इज नर्स एडमिनिस्ट्रेटर. सो द नर्स एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजेस द क्लाइंट केयर. जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, हम लोग ने नर्स मैनेजर पढ़ रहे थे. सी एक्सटेंडेड एंड एक्सपैंडेड रोल्स आर some way very closely related to each other. Okay, so the hierarchy begins such as charge nurse, assistant nurse manager, then the nurse manager. ऐसे gradually आपका post जो है with experience you will be moving up in the hierarchical level. Next is nurse researcher. Okay, the nurse researcher, what she will do, she will investigate the problem to improve the nursing care and expand the scope by using the evidence based practice. Okay, तो ये academic setting में हो सकता है. academic मतलब can be in nursing colleges, maybe hospitals, or maybe a community service agency. Okay, so this is nurse researcher, where she is basically interested to investigate problems to improve nursing care. Okay, नेक्स्ट है स्कूल हेल्थ नर्स. स्कूल हेल्थ नर्स कहाँ पोस्टिंग रहेगा? स्कूल में पोस्टिंग रहेगा. उनका बहुत सारा फंक्शन है. सो स्कूल गोल ऑफ स्कूल हेल्थ नर्स इज सुपीरियर टू एजुकेशन सक्सेस बाय एनहांसिंग हेल्थ. बट शी विल नॉट बी टीचिंग द स्टूडेंट्स. स्कूल का टीचिंग नहीं करेगी, बट हर फोकस विल बी इन द हेल्थ. ओके, सो शी इज अ डायरेक्ट केयर गिवर. डायरेक्ट केयर गिवर का मतलब क्या है? जो भी बच्चे को केयर वहां पे स्कूल में चाहिए, शी विल बी गिविंग. कैन बी केस फाइंडर. केस फाइंडर मतलब शायद सिम्टम्स पेरेंट्स ओवरलुक कर दी होंगे, बट शी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा बोर्ड में बार बार स्ट्रेन कर रहा है देखने के लिए, द चाइल्ड इज कमिंग इन फ्रंट, so vision issues are there that can be found out. Okay, next is consultant, counselor, health educator, surgery. सब कुछ is rolled into one as a school health nurse. Next is occupational health nurse. Occupational health nurse, it is a specialty practice that provide for a delivery of health and safety programs and service to worker population and community groups. Occupational health nurse जो जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पर she plays a very important role for promotion and restoration of health, prevention of injury, and protection of work-related environmental hazards. Okay, so as an occupational health nurse, this is a responsibility to ensure that whoever is working, so उनका health अच्छा रहे, illness prevented रहे, and protection from work-related and environmental hazards. फिर है पब्लिक हेल्थ नर्स. पब्लिक हेल्थ नर्स इज अ रजिस्टर्ड नर्स जिसका ट्रेनिंग किसमें हुआ? कम्युनिटी हेल्थ में हुआ है. ठीक है, सो दे एक्ट एज अ हेल्थ एडवोकेट, केयर मैनेजर, रेफरल रिसोर्स, देन इज हेल्थ एजुकेटर, डायरेक्ट प्राइमरी हेल्थ के. पब्लिक हेल्थ नर्स में ये पूरा है, जैसे जरूरत है she can be acting as a consultant, or she may be giving the actual services on a one-to-one basis. Communication disease control and disaster preparedness. Okay, communication disease मतलब ऐसा फैलने का बीमारी जो है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड है. ओके, सो शी विल एंश्योर कि जहाँ भी लोग दे आर नॉट वॉशिंग द हैंड, सो शी विल बी स्ट्रेसिंग ऑन हैंड वॉशिंग, wearing the mask, etc., and social distancing. Okay, so that is all communicable disease control and disaster. अगर disaster हो गया है, so public health nurse will be prepared to face all these disasters. फिर है प्राइवेट ड्यूटी नर्स. प्राइवेट ड्यूटी नर्स का मतलब है कि कोई बच्चे को केयर की जरूरत है, डॉक्टर हैज गिवन, बट द एक्चुअल केयर विल बी गिवन बाय अ नर्स हु is giving care in a community setting. घरों में जाकर केयर करना, that is private duty nurse. Okay, next is a rehabilitation nurse. Rehabilitation को हम लोग पढ़ लिए हैं.
So rehabilitation nurse is a person who helps in assisting the people who are having a long term disease, ताकि उनका optimal function अच्छा रहे, health अच्छा रहे, and adapt to a altered lifestyle. Altered lifestyle मतलब जो अभी का requirement है बच्चे का, so that can be fulfilled. Okay. Next is nurse epidemiologist. उसका मतलब कि infection control nurse. Okay. So nurse epidemiologist monitors standards and procedures for control and prevention of infectious diseases and other conditions of public health significance, including nosocomial infections. Nosocomial मतलब ऐसा infection जो hospital acquired infections are called as nosocomial infections. Okay, तो इनका काम क्या है? इन्फेक्शन प्रिवेंशन कैसे करना है, क्या करना है, कब हैंड वॉशिंग करेंगे, किससे किससे करेंगे, कहाँ पर करेंगे, all these things, everything. These nurse epidemiologists will be doing all those things. ठीक है, इसको हम लोग इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स भी बोलते हैं, बिकॉज आप हमारे हॉस्पिटल में भी this is being done. Okay, there are people who ensure कि जो भी इन्फेक्शन protocols है, infection control protocols है, that is being managed. Okay, so she will be conducting the epidemiological investigation, then communicable disease के बारे में she will be giving health education, in service training also she will be doing, then determine the risk factors leading to infection, उस infection के लिए क्या क्या risk factors है, and conduct surveillance of infection outbreaks. अगर कोई इन्फेक्शन काफी लंबे समय तक फैल गया, ठीक है, आउटब्रेक हो गया, बहुत सारे लोगों को बीमारी हो गया, तो शी विल बी डूइंग अ सर्वेलेंस. सर्वेलेंस मतलब कितना केसेस हुआ, किस सीजन में ज्यादा है, किस जगह में ज्यादा है, एवरीथिंग. देन इज मिलिट्री नर्स. मिलिट्री नर्स का मतलब ही है वो किसको प्रोवाइड करेगी? शी विल बी अ पार्ट ऑफ मिलिट्री एंड शी विल बी providing care to military personnel and their families, including children. नेक्स्ट इज टेलीनर्स. टेलीनर्स का मतलब क्या है? टेली वर्ड से ही समझ में आ रहा है, जो भी बातचीत हो रहा है वो टेलीफोन से हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज टेलीनर्स. सो टेलीनर्स इज वन हु कैरीज टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस विद द पेशेंट्स. तो उनका जो भी डाउट्स है दैट हैज टू बी क्लियर एंड शी विल बी असिस्टिंग एंड प्रोवाइडिंग केयर टू द फैमिलीज. नेक्स्ट इज डिजास्टर नर्सिंग. अगर कोई डिजास्टर है, सो that nursing is coming under expanded role of the nurse. So this is adaptation of professional nursing skill in recognizing and meeting the nursing, physical, emotional and social nursing resulting from disaster. Disaster का मतलब है, suppose जैसे कुछ साल पहले गुजरात में earthquake आ गया, now that is a disaster, कहीं floods आ रहा है, so children are badly affected. Okay, so disaster nursing is as adaptation to professional nursing skill and recognizing and meeting of nursing, physical, emotional and social needs during disaster. Disaster के समय हमारा क्या नीड है, फिजिकल क्या नीड है, इमोशनल क्या नीड है, that all can be studied by the composer. Okay, so this disaster nursing में this is what she will be doing. Next is peace nurse corps. उसका मतलब क्या है? This is शांति. Okay, ये आपको peace का मतलब क्या है? शांति. Okay, a nurse who performs variety of nursing activity including immunization, periodic health evaluation and preventive treatment. Okay, so peace corps nurse में बहुत सारे activities है. She will be giving टीकाकरण, that is immunization according to the age of the child, पीरियोडिक हेल्थ इवेल्युएशन. उसका मतलब क्या है? जैसे आज एक बेबी पैदा हुआ, उसका वेट था 2.2 kg 380 grams. ओके, पर उसको चेक करना पड़ेगा कि उसका वेट कितना बढ़ रहा है, सो दैट इंफॉर्मेशन हैज टू बी देयर. तो सो दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक हेल्थ इवेल्युएशन. बच्चे का कितना वेट बढ़ा, हेड सर्कमफ्रेंस कितना बढ़ा, चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना बढ़ा, ऑल दिस थिंग्स, एंड प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट. So that was all about the expanded role of the nurse. Okay, so pediatric nurse is a rewarding and challenging career. Okay, when you
take care of the children. This is really a very rewarding experience. Okay, it gives a great sense of satisfaction, and at the same time it is a challenging career. Challenging career मतलब बहुत सारे challenges हमारे सामने हैं. She not only deals with the child patient, but at the same time she is managing the anxieties and demands of the patient, of the parents or the families. So that is very, very important. The joy of watching a sick child recover can be immeasurable, but dealing with acutely ill or dying children can take its toll, making it essential that nursing going to pediatric understand what the kind of issues can arise. So that is very, very important. अब एक कोई बीमार बच्चा ठीक होके जाता है तो उससे काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है, but sometimes it may not be so, the child passes away. तो ऐसे में it is essential कि she should know what are the issues which can take place. Okay, so this was all about extended and expanded role of the pediatric nurses. If you need any clarification, please ask. Okay, you can ask the questions in WhatsApp group also, and I'm very happy. I was checking the views of the previous video, so views was around 131, so that is really good. This indicates that most of you are interested in pediatrics and they are attending the class. Thank you so much.